Hello, people. I'm Jaby KOAY, joined by STEPH. Hello. What up, bro? What up? You might catch Achara Kirk in the kitchen every now and then. She's making coffees and teas and stuff like that. It might be a little bit loud, but we gotta keep working here. In spite of caffeine needs, we're gonna keep moving. So this is a video that showed up on my recommendations called Stop Calling This Trading, Biggest Legal Scam LLA from Labor Law Advisor. A lot of you guys on the live stream have like come to me in the past, more so, asking like, hey, Jaby, what do you invest in? What do you recommend? Etc, etc. I know that Tenmei Bot, as you learned, has his own like finance related stuff. I don't know if he's still doing it, but he certainly was doing it. I think that a lot of people are getting misled today in terms of like pump and dumps. You know about those? So pump and dumps is where like a YouTuber or an influencer of some kind will go, hey, you should invest in this crypto. And then all of their fans invest in that crypto. And then the person who advised his fans or her fans, as it were, to invest in that crypto, they pull out when the price goes up and then leaves their audience hanging. That's happened a lot. That is so slimy. Yeah, you never heard that before? No. Okay, so I imagine he might dive into that a little bit. If you haven't already, subscribe to the channel, bell icon, all notifications. Vote this up, please, while you're subscribing and upvoting. Subscribe to Labor Law Advisor. There's a link in the description below. They're currently at 3.52 million subscribers. You can help them get to 4 million. All right, here we go. I am a binomist. Are you? ये डायलॉग आपने बहुत सारे क्रिएटर्स या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से सुना होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा कहने के पैसे मिले थे। पैसे लेकर प्रमोशन करना गलत नहीं है, हम भी करते हैं, बट देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल प्रमोशंस। मुझे दो चीजें बहुत पसंद है, नंबर 1 स्पोर्ट्स और उसके बाद कॉम्पिटिटिव कंटेंट। आपकी दूसरी सैलरी से काम चला लेंगे। चाहिए बस एक फोन, 3000 रुपए और हमारे एक्सपर्ट्स का साथ। कल के साथ साथ अपनी आज का भी सोचो। Achara and I have actually been part of brand deals related to those finance apps. I can't remember how many we've done, but what I always tell people anytime that's part of like something we do is do not put in money you're not willing to lose. That's extremely important. Don't put your nest egg in there. Like whatever money you put in, you have to pretend like that's just gone for all intents and purposes. And then if it goes up and you get a profit, cool. But don't like depend on that as like your retirement money, you know? Yeah. बाइनोमो, ऑक्टाएफएक्स, ऑलिम ट्रेड एंड सिमिलर एप्लीकेशंस क्या काम करती हैं? ये अपने आप को फॉरेक्स ट्रेडिंग या बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बुलाते हैं। इनकी एप्स पर आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेन करेंसीज में, गोल्ड में या बेसिकली किसी भी चीज में। फॉर एग्जांपल, आपको एक रियल टाइम बेट लगाना है कि अगले 60 सेकंड्स में यूएस डॉलर यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आप सही निकले तो जितना पैसा आपने बेट में लगाया था उसका 80% आप कमा लोगे, और अगर आप गलत निकले तो जितना पैसा आपने लगाया था सारा चला जाएगा। समझ आया? दिस इज वर्स देन गैम्बलिंग, क्योंकि गैम्बलिंग में हाउस के पास 5% का एज होता है, बट इन एप्लीकेशंस के पास 20% का एज है, एंड लॉन्ग टर्म में द हाउस ऑलवेज विंस। दैट्स हाउ कैसीनोज मेक मनी। ऐसा सिस्टम विच इज डिजाइन टू मेक यू लूज मनी, इसको एक लेजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोल के बहुत भारी प्रमोशन किया जा रहा है। ये एप्लीकेशंस अलग अलग लोगों को उठाकर अपना कस्टमर दिखा रही हैं और उनके साथ एक हाई क्वालिटी इंटरव्यू शूट करके यूट्यूब पर डाल रही हैं। फिर उन वीडियोस पर भारी पैसा खर्च करके मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट किए जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस जिनमें इनके सो कॉल्ड सक्सेसफुल ट्रेडर्स कहते हैं, First 5 years, on an average, I'm getting $15,000 to $20,000 per day. 15 लाख रुपए का प्रॉफिट पर डे, पर ईयर नहीं, पर मंथ नहीं, बल्कि पर डे। और ये बच्चा बोलता है, My biggest achievement is $9,200 in a day. रुको, अभी और है। I'm using low risk, like 1% रिस्क कैन से। 1% रिस्क पे ये सो कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडर 7 लाख रुपए पर डे कमाता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के नाम पे 1-1 घंटे के वेबिनार्स पब्लिश हो रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि आपको ये विश्वास दिलाया जा सके कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी सीख ली और हमारी ऐप डाउनलोड कर ली तो 15 लाख रुपए पर डे तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। अगले ही सुबह आपको अडानी का कॉल आएगा, उसको लोन चाहिए आपसे। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाएगा। इनके अकॉर्डिंग आप कितना भी ढूंढ लो, आपको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आप लोग बेवकूफ हो जो अब तक इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाखों रुपए पर डे कमाना चालू नहीं किए हो, क्योंकि कमा सकते हो ना। तो कौन है ये लोग जो रोते रहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है? डाउनलोड क्यों नहीं करते इनकी ऐप? आप और हम बेवकूफ ही तो हैं जो अच्छे दिनों का वेट कर रहे हैं, सरकार को गाली देते हैं। सिंपल एक ऐप डाउनलोड करना था, इतने सालों से बेरोजगार बैठे हैं। सिर्फ भारत में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में इन एप्स का स्कैम चल रहा है। इनफैक्ट इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान ने इन एप्स को बैन भी कर दिया है। इंडोनेशिया के 2 सुपर रिच इन्फ्लुएंसर्स सलमानन एंड केसुमा को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, क्योंकि ये लोग अपने व्यूअर्स को ये बाइनोमो और कोटेक्स जैसी एप्लीकेशंस ना सिर्फ प्रमोट कर रहे थे, बल्कि ये भी इंप्लाई कर रहे थे कि ये खुद इन एप्लीकेशंस पर ट्रेडिंग कर करके इतने आलीशान बंगलो, सुपर कार्स एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल आज जी पा रहे हैं। Hey, yeah, this is a thing that like makes me feel crazy about like YouTube advice sometimes. The thing about it is everything with YouTube is CPM. Do you know what CPM is?
No. I don't know what it stands for. I just know how it affects me and affects everybody on YouTube who works, doing these videos. CPM is based on like your country. It's based on what the sponsor wants to pay to, the influencer, etc., etc. So it's an exchange of money based on what you're able to generate in terms of interest off of algorithm, etc. All that means is if you are in America, you get a certain amount per click per view. If you're in India, you get a certain amount per click per view, etc. America's on the higher end of the totem pole, where like if you have an American audience, you will get higher CPM. Indian audience has a lower CPM, but irrespective, finance, as I understand it, is on the highest end of the CPM. So if you're doing finance in India versus trailer reactions, movie reviews, you're gonna get way more money doing finance CPM like this guy. When you dive into that, there's so much money to be made from it, and it makes me scared because I'm like, I have no idea who's legit, who's telling the truth, and who's just scamming me with wonderful editing and pizzazz and production value and stuff like that, because it's easy to trick people. There's this one guy, something Lopez, Ty Lopez or something like that. He goes, I'm in my garage. These are all my cars, but that's my Lamborghini back there, but I don't care about that. What I care about is these books. I read one book a day. I'm like, fuck you, that's impossible. You're lying. Exactly. And he was lying. He came out and was like, this is all just make believe. I rented this place, etc. Came clean about it. So. Oh, no. रियलिटी में ये लोग कुछ भी ट्रेड नहीं करते थे. इनको अप टू 80% कमीशंस मिलते थे इन एप्लीकेशन से. पूछो 80% किसका? जो पैसा आप हारोगे उसका. यस मतलब जिन भोले भाले लोगों ने इनकी बातों में आकर इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है और ट्रेड किया है, जबकि वो ट्रेड नहीं है, गैम्बलिंग है, बिकॉज द सिस्टम इज डिजाइन टू मेक यू लूज मनी. उन भोले लोगों ने ऑब्वियसली पैसा हारा होगा, और जितना पैसा वो हारेंगे उसका 80% कमीशन इन यूट्यूबर्स को या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को मिलेगा. इंडोनेशिया के फाइनेंशियल जर्नलिस्ट जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक करी, विंसेंसियस सिटेपू का कहना है, if we think of Binomo as a snake, it needs to be beheaded. What we've got so far is only the tail. इंडिया में भी इन एप्लीकेशंस ने भारी प्रमोशन किया है. इनफैक्ट आपको न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे बड़े बड़े पेपर्स में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन क्रॉनिकल, जी न्यूज. पूरा लंबा सा आर्टिकल समझा रखा है जिसमें बिनोमो कैसे काम करता है, क्या ये लेजिट है, इसके पास कौन से इंटरनेशनल सो कॉल्ड सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स हैं, इस पे ट्रेड कैसे किया जाए, इसमें डेमो अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसके कस्टमर्स ने इसके लिए क्या पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं. आपको ऐसा लगेगा कि जब न्यूज में आ चुका है तो लेजिट होगा, बट नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ दिखेगा, डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिनोमो. नो टाइम्स ग्रुप जर्नलिस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ दिस कंटेंट. नो डेक्कन क्रॉनिकल जर्नलिस्ट वाज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग दिस कंटेंट. दिस ग्रुप आल्सो टेक्स नो रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस कंटेंट. मतलब ये न्यूज आर्टिकल्स नहीं थे, ये एड था. बट लोग कहां इतना नीचे तक जाकर चेक करते हैं. अगर किसी बड़े मीडिया आउटलेट का नाम जुड़ गया है मतलब लेजिट होगा. और ये हमारे सो कॉल्ड भारतीय इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज भी कुछ कम नहीं. That's what's tricky about those ads. Sometimes I Google search for something like, oh, best TV or something like that. And then I find an article that says, oh, this TV is the best. And it's like a few TVs from the same brand. And I'm like, something seems like suspect. And I find out it's sponsored by that company. And it's like you have to really dig to find that out. It's so annoying. With all of the things that you purchase now, like luggage is like that. I'm like, really? oh, yeah. I'm like, what do I have cameras? Like, what am I supposed to get? Exactly. You gotta use DuckDuckGo, I guess. Yeah. Or just really scroll down like on the Google search. दबा के प्रमोशन किया है इन एप्लीकेशंस का और आपसे झूठ बोला है. इन्होंने आपसे कहा है कि ये लोग खुद भी इन एप्लीकेशंस पे ट्रेडिंग करके एक साइड इनकम जनरेट करते हैं. इनको एक्चुअली इन एप्स के बारे में जीरो नॉलेज है. आपको लगता है कि ये लोग कुछ लेजिट बोल रहे हैं, बट ये एक्चुअली में एक स्क्रिप्ट से रीड कर रहे हैं जो कि ब्रांड ने इनको दी है. आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने इन एप्लीकेशंस को शायद अपने फोन में कभी इंस्टॉल तक नहीं किया है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स एंड ब्रांडेड मटेरियल इनको ब्रांड ही भेज देती है एंड ये बस वीडियो में उसको लगा देते हैं. इट इज रियली डिसहार्टनिंग टू सी अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स promoting brands that they don't fully understand and definitely do not use. आप खुद ही सोचो, अगर इंसेंटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइंड है कि इनको कमीशन तब मिलेगा जब आप लोग पैसा हारोगे, तो ये आपका अपने व्यूअर्स का ट्रस्ट किस लेवल पर ब्रेक कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए. एक्चुअली सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, बहुत सारे पैसों के लिए. इट इज डेफिनेटली अपर 6 डिजिट्स एंड 7 डिजिट नंबर्स. और जो क्रिएटर इतना मोटा पैसा पर वीडियो ब्रांड से चार्ज करता है, वो आपको अपने वीडियोस में कहता है कि वो इन्हीं एप्लीकेशंस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करके साइड इनकम जनरेट करता है या फिर अपने खर्चे निकाल लेता है. आई एम अ बाइनोमिस्ट, आर यू? सीरियसली इतना बेवकूफ समझा है ऑडियंस को. ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमारे इनबॉक्स में इन्हीं एप्लीकेशंस के स्पॉन्सरशिप ऑफर्स नहीं आते. ये ब्रांड्स उन क्रिएटर्स को मुंह मांगा पैसा देती हैं जो क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस का भरोसा तोड़ देते हैं. हमने मल्टीपल टाइम्स इनसे इनकी लीगैलिटी पर क्वेश्चन किया और बदले में बस एक ही जवाब आता है कि हम बड़े ही रिस्पेक्टेड और लेजिट ब्रांड है, देखो हमने आईपीएल टीम्स को स्पॉन्सर कर दिया है. बाइनोमो ने स्पॉन्सर किया था सनराइजर्स हैदराबाद को और ऑक्टा एफएक्स ने स्पॉन्सर किया था दिल्ली कैपिटल्स को. बट रियलिटी इज कि आप आईपीएल टीम्स को स्पॉन्सर करके लेजिट नहीं बन जाते हो
हो एंड थैंक्स टू RBI। फाइनली RBI ने इस इशू को एड्रेस किया है एंड एक अलर्ट लिस्ट इशू की है। Yeah, this is an interesting thing about brand deals. Like, if you're dealing with an American sponsor, they actually go out of their way to tell you, yo, you need to say that this video is sponsored by. Yeah. Even Warner Brothers told me, you have to say it in the first few seconds. You must say it is sponsored by, or we will get in trouble. I'm like, oh, okay. But I dealt with some sponsors, not American, okay? And they're like, do you have to say sponsored? I'm like, yes, it's part of the legality of YouTube. Like, I don't want to trick my audience. I want them to know that this is sponsored. They're going to call me out on it if I don't say it. So I might as well call myself out on it. It's a warning to stay away from these apps because they are neither authorized to deal in forex under FEMA Act 1999 nor authorized to operate electronic trading platforms for forex transactions. इस लिस्ट में 34 एप्स के नाम है इंक्लूडिंग बाइनोमो, OctaFX एंड ओलिम ट्रेड। लाइक आई सेड, भारी प्रमोशन और IPL टीम्स को स्पॉन्सर करने से कोई भी ब्रांड लेजिट नहीं बन जाता। इन टाइप की एप्लीकेशंस पर 2 वीडियोस बनाकर हमने आपको ऑलरेडी वार्न किया था, बट मिलियंस ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी बीन मैनिपुलेटेड। अभी भी मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप भी लालच में आकर इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर चुके हो और ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो चुके हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस टाइप की एप्लीकेशंस मोस्टली केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड होती है। इंडियन लॉज उन पर अप्लाई बिल्कुल नहीं होते हैं। कभी ये लोग बंद हो गए, आपका पैसा लेकर भाग गए, या इन्होंने सिंपली विड्रॉल बंद कर दिया, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हार्ड अर्न मनी कभी वापस नहीं आएगा। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स बाय टॉप फाइनेंशियल जर्नलिस्ट जिन्होंने बताया कि इस टाइप की एप्स आपको कैसे चीट करती हैं। सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट देंगे, उसमें आप जो भी ट्रेड करोगे उसमें आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो रियल मनी है ही नहीं। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपना पैसा डाल के ट्रेड करोगे, जो बाय द वे गैम्बलिंग है। फिर ये अपने चार्ट्स एंड डेटा को भी मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप अननोइंगली गलत ट्रेड लगा दो। उसके बाद आपकी पोजीशंस को जानबूझकर डिले किया जाता है ताकि आपको लॉस ही हो जाए। फिर जब आप अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो हाई विड्रॉल फीस और मिनिमम बैलेंस जैसे रिक्वायरमेंट रख देते हैं जिससे कि आप डिस्करेज हो जाओ पैसा निकालने को। फिर भी अगर आपने पैसा निकाला तो 10-15 दिन तक पैसा कहाँ गया इसका कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे केसेस में इन्होंने लोगों को विड्रॉ करने ही नहीं दिया है एंड दैट इज अ ट्रू फैक्ट। उसके बाद आपको जानबूझकर ज्यादा लेवरेज दिया जाता है, यानी आप $1 लगा के $500 का ट्रेड कर सकते हो, जो ऑब्वियसली अगर गेम रिग्ड है तो आपको $500 का नुकसान होने वाला है। कोई देखने वाला नहीं है इनको, खासकर इंडिया में तो जीरो रेगुलेशंस है। ये fxpro.com है और बाहर के कुछ कंट्रीज में ये हाईली रेगुलेटेड है एंड इनको कंपलसरी है अपनी वेबसाइट के टॉप पर ये लिखना कि इनके टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना परसेंटेज रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा गवा देते हैं। यहाँ पर लिखा है 84.72% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स अकाउंट लूज मनी। ना सिर्फ वेबसाइट के टॉप पर बट इनके सारी एडवर्टाइजमेंट्स के टॉप पर भी इनको ये लाइंस लिखनी जरूरी है, जो कि छोटे फॉन्ट में नहीं है, काफी प्रोमिनेंटली ये चीज विजिबल है। डू नॉट वेट फॉर इट टू बिकम अ नेशनल स्कैंडल। अपना टाइम और पैसा दोनों बचाओ, और अगर वो किसी अच्छी चीज सीखने में लगाओगे तो नेक्स्ट टाइम ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपको कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के नाम लिख सकते हो जिन्होंने पैसों के लिए अपने व्यूअर्स का भरोसा तोड़ा है, ताकि लोगों को यह पता चले कि फाइनेंशियल एडवाइस हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। उन इन्फ्लुएंस का नेटवर्थ प्रोबेबली 10 डिजिट्स में जा चुका है, बट उनके व्यूअर्स का एक्चुअली नुकसान हुआ है। Not fair at all. I thought that was informative. Yeah. How'd you feel? I thought that was really informative. I think that we are like living in the day of fast cash. How do we do it? How do we invest? Crypto, there's so many options now. People are confused. They're seeing a lot of people get money quickly doing certain things. And we also follow a lot of people that we want to believe in. So there's a lot of misinformation about money and people can be such pawns to the schemes of it. So I think like the more information we get out about this, it's like makes it fair so people are, when they want to invest, they do it right. Yeah. Instead of like thinking that they're investing in something that's not even, that's gambling, which is interesting that he brings up that point, like it's gambling. There's always been this desire to have more, and whether it's to take care of ourselves, take care of our family, or just because we envy the lifestyle of the rich. People will jump into something not knowing that it's, you know, it's fool's gold. It's fool's money. You're parting with your money without actually understanding why you're parting with it. I got into the start of pandemic, you know, trading on Robinhood. And the truth is I didn't really know what I was doing. And so I did make profit because I was like trying my best with my fraction of an understanding of things to like have a reasonable analysis of things. Even that was like stupid analysis. And then I like a fan of the channel hit me up. He's like, you should use these apps to understand what you're looking at. So you understand what's undervalued, overvalued. Because basically the rule of thumb that he taught me was you generally want to invest in stocks that are undervalued. And because if they're undervalued, then eventually, I don't want to get into it. Yeah. But what I'm saying is undervalued stocks is like, you have to do your own research and education. That's what this comes down to, is you want to get educated. We're all looking for this fast track to success because we see these news stories of people who invested
in Bitcoin when it was a penny, and then now they're like billionaires or whatever. It's like, oh, I want that. And you get this FOMO, and FOMO is what drives you towards making really dumb decisions. I did it a little bit myself. You know, I got excited. Did you invest? No, I remember I got a few investing books though, and I did read, like, I have basic principles now, which I never had. You know, we Okay. never learned that in school. I took like one econ class. It doesn't really cover it. So I have a very, very basic understanding. I would like to have a better understanding to be able to invest. We're working on it. Steph, you're an influencer by Nomer or whatever the name of the company was. Let's say they came to you and they're gonna pay you obscene money to betray the trust of your audience. Would you do it? No, I would never betray that. I would never do that. I would never have people buy stuff that I wasn't using. I don't think I would ever promote something I wasn't using. Okay. So if I was using it and it was actually like doing well for me, I'd be like, this is how I'm using it. This Yeah. is what I'm doing. But if I'm not, I can't. Truth and honesty is like So now how do you distinguish between you and the person who would? karma. Like as Being a Buddhist. you're dealing with a lot of young, unsuspecting, eager individuals who want to have a better life, you know, and they envy the lifestyle of the wealthy, or they just want to be able to take care of their family, whatever it is, and they're looking for this fast track to success. Like my father, I would get really frustrated with him growing up because he would buy these get rich quick schemes that he saw on TV. This is a thing of the past in a way, because like I don't think it's like stuff that you, I don't know, I haven't watched television, like proper television in a while, but they used to advertise like these ways you can get rich, and you know, you pay $200 for this box that they give you and it'll tell you all the secrets. But it's like, number one, more than likely it's not going to do shit for you. Number two, you have to apply it. There's no easy way. You have to apply yourself, and that's the thing that a lot of people don't realize when it comes to making massive amounts of money. You have to apply yourself. That is the most important thing. There's no getting around the hard work. It's just, what hard work do you want to do? Yeah. You know, everyone's always trying to skirt around it. Like, oh, it's too hard. I want to do I want something easier. Like, nothing's easy. Life is fucking hard. You have to pick the hard that you like. Yeah, I was gonna say that. You just have to pick something that you like and to remind yourself, when you're thinking about people you want to be like, whoever's inspiring you to make more money, who are they? They're most likely someone who played the long game. Yeah. I don't personally have anyone I look up to that's played the short game. Yeah. Everyone I've ever looked up to has like really invested a lot of time. I was gonna say, like a long time ago, I tried to do photography as a side gig, like headshots and stuff like that. I was supposed to be supplementary to the other stuff I was doing, and then I realized, no, in order to make money there, I have to invest myself in that. Whatever you do, if you want to make money, you really do have to apply yourself. And so again, I must emphasize, don't be afraid of the hard work. Choose the hard work that you want to do. It's the biggest lesson, for me anyway. Be mindful of these scams. Like, you never know on YouTube who's like trying to push you towards something just to make them make a profit for themselves. That's the scary thing. Just have a more skeptical viewpoint is so important. Be skeptical. That's the biggest lesson. Especially with your wallet. Yeah, especially with your wallet. Be skeptical. Don't part with your money so quick. Be skeptical. Yeah. But anyways, you guys, thanks so much for hanging out. Hopefully you enjoyed this. Do subscribe, bell icon, all notifications. Vote this up. Subscribe to Labor Law Advisor. There's a link in the description below for his channel. Want to click on that, give the original upvote, subscribe to him from there. I'm Jaby KOAY. This is STEPH SABRAW. Peace out.